Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Arpit sir, welcome to the afternoon session. I hope you can hear me. Yes, Anuj. You are clearly visible and audible. You can share your screen. We are going to in next 2 minutes. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session. We have Mr. Arpit sir with us, जिन्होंने काफी amazing sessions लिए थे in the last 2 weeks on option strategy. This week we have a session on decoding derivatives with our expert Shivangi Shada. So don't forget to join in on Friday 4 p.m. That will be the last session of the month as well. Today we'll start with the Nifty outlook, Bank Nifty outlook. Eventually we'll give you this current strikes on radar if we have any option trade. Then we'll move to the queries, and then at the end we'll share the BTST. So Arpit sir, handing it over to you, and then we are good to go. Yeah, very good afternoon, everyone. Just give me a minute. I'm just setting up the frame. Sure, sir. Yeah. Very good afternoon, everyone. So welcome to pre-expiry. I can say tomorrow we'll be having monthly expiry of Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Mid Cap. So all the NSE instrument will have monthly expiry tomorrow. And in last couple of months, lot of dynamics have changed in the derivatives segment altogether, and we can see that changes in last couple of months. How much the market has changed, how much volatility has increased, intraday fluctuations has increased, and a lot of things have happened in last couple of months, and we have seen that on daily basis. So coming back to the flow for the session, starting with the Nifty Bank Nifty outlook, followed by the overall market setup wise, the broader market, mid cap, small cap, certain conviction delivery ideas, looking at the market setup, few BTST or STBT depending on the market setup. So first and foremost, starting with Nifty, tomorrow we have monthly expiry for Nifty and Bank Nifty as they are the major primary instrument of the NSE segment. So starting with Nifty, almost in last 3.5-4 months, we have seen a fall in Nifty continuously. So monthly scale पे अगर देखें हम पिछले 4 महीने से लोअर एज लो रोज बना रहा है. वीकली स्केल पे ये हफ्ते एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था 23,050 के नीचे, 22,800 तक टच किया, एंड देन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज वी हैव सीन सम बाउंस बैक. सो अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेंड अभी भी वीक है. 23,333 एक मेजर हर्डल जोन है. जब तक वो सरपास नहीं करता है तब तक ट्रेंड ओवरऑल एक विक्स है. इमीडिएट बेसिस पे 22,800 एक मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 23,333. सो निफ्टी आफ्टर शार्प डाउनटिक वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक रेंज में ट्रेड करेगा. नीचे 22,800 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 23,333 का हर्डल है. We have budget on 1st Feb, so I think that could act as a key trigger for the next directional move. तब तक हमें लग रहा है कि ये एक उठक पटक इस ब्रॉडर रेंज में रहेगी. Now coming on to बैंक निफ्टी में अगर सेटअप देखें थोड़ी सी पिक्चर अलग है. इधर सेटअप वाइज अगर देखें वीकली स्केल पे रिलेटिवली बेटर है. डेली स्केल पे मंडे को जो फॉल हुआ था उसमें भी क्वाइट रेसिलिएंट था, और डेली स्केल पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और वहां से हमने रिकवरी देखी है. बट अगर 3 हफ्तों का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है. नीचे में 47,900 48,000 मेजर सपोर्ट जोन है, ऊपर में 49,500 49,600 मेजर सप्लाई जोन है. तो फ्रॉम लास्ट 8 to 10 सेशन एक ब्रॉडर रेंज पे ट्रेड कर रहा है. रिलेटिवली निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर स्टेबल है एंड निफ्टी एक रेंज बाउंड में है. बैंक निफ्टी में भी हम जो बात करें मेजर मोमेंटम जो है वो आईसीआईसीआई एचडीएफसी, बिकॉज आईसीआईसी का रिजल्ट आने के बाद काफी रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस हमने देखी थी कल के सेशन में, और अच्छी बात यह है वो अपनी गेन्स को होल्ड कर रहा है. सो बैंक निफ्टी भी एक ब्रॉडर रेंज में बट रिलेटिवली निफ्टी से बेटर शेप में है. एंड अगर आज भी सेटअप देखें सो वन ऑफ द मोस्ट अंडरलाइन फैक्टर जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वो है क्रूशियल एंड वन ऑफ द की फैक्टर दैट इज इंडिया विक्स. जनरली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल इंडिकेटर है जो ग्रीड एंड फियर के नाम से भी जाना जाता है. पिछले काफी हफ्तों से हाई राइज हाई लोस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. बजट के पहले तक इंडिया विक्स में अच्छा स्पाइक देखा है हमने, ऑलमोस्ट 12.5-13 के लेवल तक का 18 तक का मूव आ चुका है, बिकॉज ऑफ विच द प्रीमियम्स भी काफी ज्यादा है, वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है, एंड ये बजट के बाद गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, बट तब तक डेफिनेटली वोलेटिलिटी हायर रहेगी. ऑल्सो टुडे वी हैव यूएस फेड इवेंट, along with that result earning season is going on, so lot of events are there because of which lot of volatility is also there. But having said that, we have to take one day at a time. Immediate basis पे निफ्टी का मेजर सपोर्ट है 23,000 का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 48,888 का. आज सुबह से देखें तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर चल रहा है,
बहुत मेजर मोमेंटम नहीं है, बट स्लोली स्टडीली इज मूविंग अपवर्ड. रिलेटिवली निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है. सो वी हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम. वी हैव टू प्ले दैट ब्रॉडर रेंज. निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट है 23,000 का. बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट है 48,888 का. अपसाइड में बैंक निफ्टी 49,600 650 का हर्डल है. निफ्टी में 23,333 एक मेजर हर्डल जोन है. Now, अगर ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात करें, सो ऑलमोस्ट जनवरी सीरीज में एक अच्छा हमने करेक्शन देखा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 10 to 12% का, एंड दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट करेक्शन वी हैव सीन इन लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 2 years. That is quite a meaningful correction. And stocks में almost after जो पूरा NSE 500 का यूनिवर्स भी देखे, roughly around 80 to 85% stocks have corrected more than 20-25% from their life highs. So that clearly indicates कि broader market में काफी पेन है. और हम काफी टाइम से पिछले काफी हफ्तों से भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक जो ट्रेंड रहा है मार्केट का लोअर हाई स्ट्रक्चर रहा है, 2-3 दिन बाउंस बैक आता है, वहां से वापस अनदर सेल ऑफ हो जाता है. बट इस बार का जो सेल ऑफ था वो काफी इंटेंसिफाई था. एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस जो सपोर्ट जोन है अभी क्रूशियल, निफ्टी में 22,700, मिड कैप में 55,000 के अराउंड, एंड बैंक निफ्टी में 47,500 47,750 एक मेजर सपोर्ट जोन है. गोइंग फॉरवर्ड बजट के बाद हमें देखना आएगा कि यहाँ से कैसे हम मार्केट को शेप अप देखते हैं. अच्छी बात यह है आज थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी है, जिसके वजह से सिलेक्टिव रियलिटी डिफेंस स्टॉक्स फार्मा थोड़ा सा पुल बैक है. सो ऑल इन ऑल मार्केट प्राइस जो है बिगर ट्रेंड अभी भी पेन में है, बट अभी पुल बैक मूव में जो मोमेंटम है वी हैव टू प्ले दैट स्विंग. कमिंग बैक टू आइडियाज, सो एज योर फर्स्ट पिक फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, बैंकिंग रिलेटिवली बेटर है. सो उसमें अगर हम आईसीआईसीआई का बैंक चार्ट सेटअप देखें, सो वन ऑफ आवर फर्स्ट सीडीआई आइडियाज इज आईसीआईसीआई बैंक. पूरा मार्केट की फॉल भी रिलेटिवली आईसीआईसीआई बैंक हैज आउट परफॉर्म. अगर हम वीकली सेटअप देखें तो बेस फॉर्मेशन बन गया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, लोअर हाइज को नेगेट किया है एंड वापस अपने सपोर्ट जोन से घुमा है. सो हमें लग रहा है आने वाले 10 से 12 दिन की व्यू के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक वुड गेट सीडीआई कॉल विद इन द बैंकिंग स्पेस. 1250 अभी चल रहा है, 1200 से 45 से लेके 1250 की रेंज में बाय करें. 1215 का स्टॉप लॉस रख के पर धीरे धीरे 1300 के टारगेट ले. So first CDI call that we can go for is ICICI Bank. Also, we would like to mention we have to be very selective for the overnight trades because result season है. And heavy weights में relatively safety है, mid cap, small cap, high beta है. So आपको उसके हिसाब से प्लान करना होगा. तो first CDI call हमने already share किया है, that is ICICI Bank. Apart from that, we'll see for couple of more ideas also कि कैसे play out करना है. अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट मेरा ऑलरेडी लैपटॉप पे ओपन है, हम ट्रैकिंग दैट, बट एज ऑफ नाउ वोलेटिलिटी हाई है और मोमेंटम जो है वो मेजर है नहीं. सो अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप लगता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन की ट्रेड के लिए, विल डेफिनेटली अपडेट सेटअप वाइज में. आल्सो फॉर द बीटीएस एसटीबीटी वी आर लुकिंग फॉर द सेटअप. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू मेंशन इज budget is there. So today we have released the budget report also, in which we have released 2 strategies. So definitely that will be shared with everyone. But generally, whenever we have seen a major event, we would always like to go with the hedging strategy. So hedging strategy हमने recommend की है February series में, monthly series में, जिसमें हमने 23,000 का पुट बाय करके 22,000 का पुट सेल किया है at net costing over 250 points. So ये जो रिपोर्ट है हम लोगों ने रिलीज करने वाले थोड़ी देर में, so definitely आप लोग को भी मिल जाएगी. So that is a budget strategy that we're going to release. What we can do, Anuj, we can take some of the stock queries in the meantime, and as per the BTST or new trading ideas if we get from the option side or on the stock side, we'll update. Sure, sir. So we on Tata Motors, Feb 750 call, bought at 35. Tata Motors, Feb 750 call, bought at 35. Okay, 35. So if I see overall, as first and foremost, you have got a February series call, so definitely there is space for to hold the call. पूरे मार्केट का सेटअप वाइज देखें तो काफी हेवी वेट्स में काइंड ऑफ अ डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है. अगर हम डेली स्केल पे देखें, सो जहां से पहले दिसंबर में टच किया था अराउंड 725, वापस उसने वहां से रिबाउंड किया और वहां से हमने लोअर हाइज को नेगेट किया. तो सेटअप वाइज बहुत ग्रेट नहीं है, but at the current junction I think slowly steadily we can expect move towards 775 780 levels के लिए. So आपकी हमारी सलाह यही रहेगी, continue to hold the call जब तक टाटा मोटर 720 के ऊपर है, 720 725 के ऊपर, continue to hold the call because February series है तो entire month is है. But one thing I would like to add, today I think there are the results for Tata Motors, so please keep your sizing accordingly. Result का overnight हमें नहीं पता रहता कि कैसे play out होगा.
सो अगर कॉल है तो आप साइजिंग उसके हिसाब से मेंटेन रखिए। लेवल वाइज 725 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में पहले 777 और फिर 785 के धीरे धीरे मूव अप टिल पॉजिटिव बायस। सर हुडको फॉर 2 days पर्सपेक्टिव। हुडको आई थिंक पीएसयू स्टॉक्स जो है रहे हैं ओवरऑल सेटअप वाइज, ये आई थिंक अभी एफएनओ में भी आ गया है हुडको। चार्ट सेटअप वाइज अगर देखें तो बिगर ट्रेंड अभी भी पेन में है, डेली स्केल पे लोअर इसको नेगेट किया है। सो अगर पुल बैक प्ले करना है तो आप कर सकते हो। आपको 208 का स्टॉप लॉस रखना है, 220 के टारगेट के लिए। ध्यान रखिए ये सब काउंटर थोड़ा हाई बीटा है, सो प्लीज फॉलो द स्टॉप लॉस। 208 के स्टॉप लॉस से 220 के टारगेट पे यू कैन प्ले दिस स्विंग। सर you view Bajaj Finserv? View on Bajaj Finserv? Yes. So if I see overall Bajaj Twins, both are in great shape. In last couple of days, in last 7 to 8 days, we have seen quite a correction in broader market. But Bajaj Finserv, Bajaj Twins दोनों ही strong रहे। अगर मैं बजाज फिंस का जो चार्ट सेटअप वाइज देखूं तो डेली स्केल पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, स्लोली सडनली मूव अपवर्ड हुआ है। सो आई थिंक सेटअप वाइज हमें धीरे धीरे 1850 1880 तक का मूव आ सकता है। एक और चीज इसमें ऐड करना है, इसका भी शायद रिजल्ट आने वाला है आज या कल में, सो वी नीड टू चेक द डेट्स। सेटअप वाइज 1740 का सपोर्ट है, ऊपर में 1850 1880 धीरे धीरे अप मूव आ सकता है। सेटअप वाइज दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। So Kalyan Jewellers. Yeah, so a lot of things has changed in this stock in last couple of weeks. So if we see the setup wise, the setup was quite promising till the end of the December series, but post that we've seen quite a heavy fall from 770 levels to around 450 levels. Generally, such falls are meaningful. So setup wise, it has dampened the structure on the monthly and weekly scale. So setup wise, we would advise कि करंट जंक्शन का अभी भी ट्रेंड एक वीक ही है, बाउंस बैक मूव आता है टुवर्ड्स 475 480 लेवल्स तक का। वी वुड एडवाइज टू एग्जिट दैट स्टॉक विद इफ ट्रेडिंग इज योर माइंडसेट। सेटअप वाइज इन्वेस्टमेंट वाइज भी अगर देखें तो थोड़ा भी पेन है स्टॉक में, जब तक ये 500 500 नहीं निकलता तब तक बायस वुड बी नेगेटिव। In the meantime, one BTST idea that we are looking good and we have flashed on terminal also is Zomato. So Zomato, once a darling, we have been recommended the last year lot of time, but पिछले 2 महीने में अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 2 महीने में नहीं, पिछले 30 to 35 डेज में एक अच्छा करेक्शन हमने देखा है फ्रॉम 300 लेवल्स टू 200 लेवल्स। सो Zomato फर्स्ट इज अ BTST आइडिया। आज स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है, स्टॉक ऑलरेडी अब 4 to 5% अप है, but the risk reward is quite favorable. So Zomato would be a first BTST idea. 218 से 219 की रेंज में बाय करें, 214 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 227 के टारगेट पे Zomato would be a first BTST idea. जो लोग Zomato को क्वेरीज पूछ रहे हैं, it has been answered. Yes. Sir, Nifty 23K पे है, should I carry forward? Nifty 23K पे, I didn't get to 23K. Sorry, it must be 23,000 put. So, okay, put. The question is for put. Yes. Okay, so if I see setup wise, the first question is the put is for tomorrow or the next week or the monthly. The first question is that, assuming that अगर वो next कल का ही है, तो setup wise I think immediate basis पे put के setups वैसे बन नहीं रहे मार्केट में। So we'd advise अगर 23,100 के ऊपर क्लोजिंग आती है निफ्टी में आज, better to exit that put and better to wait for to create any new positions because आज US का Fed का इवेंट भी है, इनका मंथली एक्सपायरी भी है। सो 23,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, बेटर टू एग्जिट दैट पुट एंड वेट फॉर फ्रेश सेटअप टुमारो इन द एक्सपायरी डे। So you view on CDSL? Similar, like exchange space was quite a good momentum in last couple of months, but post that पिछले 1 month almost January के start से हमने quite a steep fall हमने देखा ये सब stocks में, and generally when we see such steep fall from high levels it takes some time for recovery. तो setup wise अगर हम देखें जहाँ से रैली शुरू हुई थी, let me go on to the weekly chart. From around 1020 1250 1230 लेवल से वहाँ पे आके एक बार पॉज दिया है, डेली पे अभी भी पेन है। सो सेटअप वाइज 1350 का एक मेजर हर्डल है, जब तक 1350 नहीं निकलता है तब तक आई थिंक बेटर टू वेट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। सेटअप वाइज अभी भी वीक है, सो 1350 एक मेजर हर्डल जोन है, बेटर टू वेट क्लोजिंग अबाउट दैट
will change the setup for the stock. And setup wise is still weak, so better to wait for 1350 levels on the closing basis. In the meantime, one more thing from our conviction ideas, as market has find some support from the lower levels, so few selective ideas are looking relatively better. And उसी में हमने FMCG another CDI call that is looking good is Marico. So Marico अगर हम चार्ट सेटअप वाइज देखें पिछले ऑलमोस्ट एक महीने में हमने अच्छी खासी कार्नेज देखी है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, बट Marico has been quite a strong counter within this space. So वीकली स्केल पे काफी स्ट्रॉन्ग है, रेंज ब्रेकआउट दिया 660 665 के ऊपर, relatively FMCG space में नीचे से थोड़ा रिवर्सल है. So second big CDI call is the Marico for a view of 5 to 7 days to 10 days perspective. 672 से 675 के रेंज में बाय करें, 650 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 705 के टारगेट के लिए Marico would be a second CDI call. I hope the levels are clear, Anuj. Yes, sir. I'll just repeat. Marico buying at 677, stop loss 650, target 705. Yes. And for Zomato, the buy was 218, stop loss 214, and the target was 227. Right. Sir, your view on AB Capital? AB Capital, let me have a look. Generally, this counter is a strong downtrend only. Just let me have a look. But AB Capital, what is the price for that? Yeah, so I think AB Capital, if we see the setup wise, overall the stock is in downtrend. हालांकि आज थोड़ा सा अप में हमने देखा है बिकॉज ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक हमने देखा है. तो सेटअप वाइज 180 एक मेजर हर्डल जोन है, 170 और 180 एक मेजर हर्डल जोन है. 180 की क्लोजिंग के ऊपर ही स्टॉक का ट्रेंड चेंज होगा, तब तक थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर में ही रहेगा. सो अगर किसी ने पोजीशन बनाई है सो बेटर टू एग्जिट नियर 180 लेवल्स. Closing above 180, better to take a fresh view on the stock for an upside move towards 185, 188 levels. Coming back to Nifty bank setup and Nifty, let us revisit if there is any momentum or some trade setup we can get. I'm just looking at the bank Nifty 15-minute chart also. So slowly, steadily, it is moving in a band between 48,888 to 49,250. And if I see the India VIX also, it is steadily moving higher. So slowly, steadily, हमें decay दिख रहा है. But as of now, setup wise, there is no major momentum. Let me have a relook at Nifty 50 chart. Over here also, slowly, steadily, it is moving higher. Though it is 180 points above from previous closing, but the momentum is very slow and steadily. Though if we see any setup wise, definitely will update. Also, a couple of things we like to mention. As India VIX is moving higher, and in last couple of weeks we have a session on option strategy. I think this is a perfect time to deploy strategy for overnight positions or to play the budget swing, because generally whenever India VIX is higher, the premiums are very much higher. And a lot of times we tend to say that if, for example, Nifty में एक अच्छा momentum आया और आपने naked call buy किया है, बट वहां से निफ्टी 150 से 200 पॉइंट भी चला बट कॉल नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स वहां से कूल ऑफ होने लगा. सो व्हेनेवर देयर इज हायर विक्स, बेटर टू गो विद ऑप्शन स्ट्रेटजीज लाइक बुल कॉल स्प्रेड्स, बेयर पुट स्प्रेड्स, जो हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी के सेशन में डिस्कस भी किया लास्ट टू लास्ट वीकेंड. सो जनरली सच स्ट्रेटजीज आर यूजफुल टू प्ले द इवेंट. एंड लाइकवाइज बिकॉज इंडिया विक्स के प्रीमियम काफी शार्प है एंड बिकॉज ऑफ व्हिच द प्रीमियम्स आर क्वाइट हाई. So better to play through spreads to make the most of it. And as we are talking, Zomato में अच्छा movement pickup भी हुआ है, so that we can play with that. Along with that, a second idea that is looking promising. Let me have a look at the chart. Within the exchange space itself, it is CAMS. So CAMS अगर हम चार्ट सेटअप वाइज देखें, so अभी चल रहा है 3900 के अराउंड. बिगर ट्रेंड अभी भी पेन में है, बट जैसे हमने कहा कि ओवरऑल पुल बैक ट्रेड ये सब स्टॉक्स में अच्छा है एंड पुल बैक ट्रेड में 2 से 3% का मूव अच्छा आ जाता है. सो दैट इज द सेकंड बीटीएसटी आइडिया. कैम्स 3920 अभी चल रहा है, थोड़े करंट लेवल पे थोड़े से डिप पे बाय कर सकते हैं. 3840 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ऊपर में 4100 के टारगेट के लिए. सो सेकंड बीटीएसटी आइडिया इज कैम्स. फर्स्ट जो जोमेटो है हमने ऑलरेडी शेयर किए लेवल्स to play the pullback, and the risk reward is quite favorable in that setup.
Sir, view on Maruti for tomorrow. So Maruti has just come out with the results in couple of hours ago, and if you see the setup as post results, some after a uptick, it again failed to hold at high levels above 12,200 levels. So setup wise एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 11,600 का सपोर्ट है, ऊपर में 12,200 का हर्डल है. ओवरऑल वीकली सेटअप वाइज अभी भी पॉजिटिव है. तो जब तक 11,600 11,650 के ऊपर रहता है, बायस वुड बी पॉजिटिव for towards 12,200 12,400. Having said that, we need to keep one thing in mind, guys. As you've seen the market setup wise, we are not seeing a structural one way move because the bigger trend of the market is in downtrend. A couple of months earlier, the bigger trend of the market was in strong uptrend, and because of which we were seeing good swings on the upside segment. But now, if you see from the last couple of months, the setup of the market has changed, and movement जो रहा है थोड़ा erratic रहा है. So you have to be prepared with your shorter target, shorter stop losses, and you have to manage your stop losses very well because volatility भी काफी है, and there are no one-way swings. That was happening in the market. So जैसे मार्केट का सेटअप है, हमें उसके हिसाब से शेप अप होना पड़ेगा. लेवल वाइज 11,650 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 12,200 और फिर 12,400 के मूव. Sir, I am holding IRFC share 1237 quantity bought at 153. So IRFC another railway PSU stock, and if you see the setup wise, overall एक range में फंसा हुआ है. What is the buying price, Anuj? 153. 153. So I think setup wise, after a corrective move from 150 levels to 135, again it has negated lower highs. We would advise to buy at current levels. आप एवरेज कर सकते हो स्टॉक को बिकॉज आपके बाइंग प्राइस 153 154 है, काफी ऊपर की तरफ है. सो इस लेवल पे आप एवरेज कर सकते हो. 137 का स्टॉप प्राइस रख के ऊपर आपको 147 और फिर 150 के मूव के लिए प्ले कर सकते हो. हैविंग सेड दैट, बिकॉज बिगर टर्म ऑफ द स्टॉक पेन में है, सो वन वे रैली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग. स्लो एंड स्टेडीली रैली वी एक्सपेक्टिंग. सपोर्ट जोन से टर्न अराउंड हो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है. Add at current levels with keeping stop loss of 137 for an upside move towards 147 150 levels. Kailash, the recordings are not available. These are live sessions, so you can join Stockholm and attend these sessions. Also, just coming back to the Bank Nifty, I was just looking at the chart. Though it is trading near day's high, and I'm looking at the option chart similarly. Option chart is still in a range, whereas the spot and the future chart is making day high. So that clearly indicates that whenever there is lack of momentum, at the same time Intervix is higher, option buying is not that fruitful. And if you see the setup wise, I'll open up the intraday chart also for Bank Nifty. If you see the intraday 50-minute chart, it is trading near day's high. But at the same time, the option that I'm looking for Bank Nifty 14,500, 14,600 is still in a range. So such times it's better if you want to play out the view overnight. Naked call या naked put का हमारी advice नहीं रहेगी. Better go with spreads such as bull call spreads. That will be much more advisable. जिसमें आपका risk reward defined रहेगा, stop loss आपको पता रहेगा और maximum reward कितना मिल सकता है वो भी defined रहेगा. So such setups में आपको काफी अच्छा benefit रहेगा. Along with that, CAMS and Zomato हमने दो BTS के आइडिया शेयर किया. CAMS में बहुत बड़ा अच्छा अपटिक भी आया है. लास्ट 2 से 5 मिनट में ही 25 से 30 रुपए का मूवमेंट भी आया है. एंड जनरली सच काउंटर्स गिव सच क्विक मूव्स आल्सो, सो प्ले इट अकॉर्डिंगली. ओवरनाइट में कैसा मार्केट का क्या इवेंट यूएस फेड का रहता है, उसका क्या आउटकम रहता है, रियली टू अ लेवल नो वन नोज बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स. सो एटलीस्ट आप अपनी पोजीशन साइजिंग हेज रखें. ऑल्सो जो हमने सीडी आइडिया कॉल्स दिए हैं, आप उसके रिजल्ट डेट देख के रखें. अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको ध्यान रखना है. और अगर आपकी पोजीशंस है, सो प्लीज बाय some hedging puts or calls depending upon the stock position that you have. So your view on Havells? Havells, another counter from a consumer space. So even this has been pressure for last couple of weeks. However, setup wise देखे, so let me have pull out the weekly chart. वीकली चार्ट में नीचे से थोड़ा सा रिकवरी हमने देखी है, बट स्टिल लोअर एज लो लोज बना रहा है. सो अगर बाउंस बैक मूव प्ले करना है तो बाउंस बैक आ सकता है, बट वी वुड एडवाइज 1555 1555 उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी सेट चेंज होगा मेजर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक. तो 1555 के ऊपर ही सेटअप चेंज होगा. तब तक एक बार ओवरऑल रेंज बाउंड टू नेगेटिव बायस है ओवरऑल काउंटर. Sir, your view on IEX?
IEX, I think the mojo factor, this counter has lost it, and if we see the monthly and weekly setup also, it is grossly underperforming. Weekly setup में अगर हम देखें तो after a sharp corrective move from 220 to 30 levels, वहाँ पे बेस बना था 160, वहाँ से हमने थोड़ा वापस अपटिक देखा 190 तक का, और वहाँ से हमने वापस फॉल देखा है. So overall एक नेगेटिव बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है. इमीडिएट बेसिस पे ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है. नीचे 165 का सपोर्ट है, ऊपर में 188 का हर्डल है. ये रेंज अगर आपको प्ले करनी है तो डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं. अभी नीचे के लेवल से घूम रहा है, सो आप लोग बाय कर सकते हैं, बट अपसाइड भी कैप है टुवर्ड्स 183 186 लेवल्स तक का. सो वहां तक ही मूव लग रहा है. ओवरऑल साइडवेज टू एक रेंज बाउंड काउंटर है द बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक. सर भारत फोर्ज auto ancillary stocks has quite taken a beating and setup wise अगर देखें क्लियर डाउन ट्रेंड में रहा है. ऑलमोस्ट जून सीरीज अगर हम देखें लास्ट काफी ऑलमोस्ट 5 से 6 महीनों से एक क्लियर डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक. कोई भी प्रीवियस वीक के हाई को निकाल के क्लोज नहीं कर पाया है, एंड आई थिंक सेटअप वाइज अभी भी कोई मेजर रिवर्सल नहीं है. जब तक ये 1250 1260 नहीं निकलता है तब तक सेटअप जो स्टॉक का है वो वीक ही रहेगा. सो कोई भी अगर आप पोजीशंस अटके, ट्राई टू एग्जिट ऑन बाउंस नियर 1250 1260 लेवल्स, and make sure don't try to bottom fishing, because generally such bear markets में we try to find out the bottom fishing and वहाँ से stock और correct हो जाता है. So better wait for some stability and try to avoid the falling counters that are falling continuously from last couple of weeks. Having said that, Anuj, we can take one more query and then I'll just like to summarize everything and then we can pose that we can close it out. Sir, persistent and steel case. Yeah, so pose that I'll just summarize. Persistent, if we see the mid-cap IT counters overall has been relatively better, though it's been quite volatile. But the good part is that in spite of so much volatility, the stock is trading in a life high territory. So setup wise अगर हम देखें, so एक major support base है इसका 5800 5900 का. So setup wise काफी positive है. जब तक ये 5800 5900 के ऊपर रहता है, bias would be positive towards 6350 6500 6006 levels 600 levels के लिए. Overall bias positive है. Which was the other counter, Anuj? Steel case. Steel case. Yeah. Steel case. I think it's newly listed. Steel case, I think it's listed on NYSE. I think I cannot figure out the name over here. No worries. But having said that, just to summarize things, Nifty key levels are between 22,800 to 23,333. The bigger trend is still in pain, but नीचे के से थोड़ा सपोर्ट बेस हमें बाइंग दिख रही है. अपर बैंड में 23,333 एक मेजर हर्डल जोन है. बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 48,000 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है. ऊपर में 49,500 एक मेजर हर्डल जोन है. वहां से फ्रेश मोमेंटम क्रिएट हो सकता है टुवर्ड्स 50,000 के लिए. We have budget, we have Fed event, we have earning season. Lot of events are piled down. Tomorrow we have monthly expiry. So tomorrow, after a long time, we'll be having Nifty, Bank Nifty, mid cap expiry all together. So definitely it would be a good day to watch for, and definitely we'll try to take out and get the maximum benefits that we can play it out through option trades. BTST में हमने Zomato and CAMS दिया हुआ है. CDI में हमारा Kotak and ICICI Bank and Marico are CDI trades. So I think over here we can summarize, Anuj. Yes, sir. So I guess you have already summarized it pretty well. So that will be all for today's session, guys. If your queries are not answered, feel free to drop them on Stockholm. Tomorrow the session will be taken by Chandan sir, and then we'll have a special session on Friday with Shivangi Sharda ma'am. So don't forget to join in. That will be all. Thank you, everyone. Thank you, Arpit sir. Thank you all, guys.